So having said that, I would like to, by way of invocation, worship what we call the Panchadevata, and then Pandit Umesh will lead us off in bhajan glorifying Bhagavan Sri Krishna. So we concentrate on the Panchadevata. Who are these Panchadevatas? Bhagavad Mahapuran tells us there are 5 aspects of divinity we need to worship on a daily basis. Lord Ganesh, Devi Ma, Bhagavan Shankar, Lord Vishnu, and Suraj Narayan Swami. And metaphysically, the reason is quite obvious. Through the worship of Lord Ganesh, we develop discriminative power, or vivek, gyan, which is necessary. The ability to differentiate between real and unreal, truth from falsehood, etc. Devi, mumukshutva, that intense longing to be in oneness with the Lord. Also, as I explained last night, it's Shakti, willpower. Without willpower, you can't survive. Bhagavan Shankar, Vairagya, the power of Tyag, to let go. And one important aspect of life is letting go. If you can't let go, cling on like leeches, then you sink. If there's one thing we have to do in life is to let go. And it's better we learn to let go voluntarily than be forced to let go. Bhagavan Vishnu symbolizes Sattvic Prakriti, the state of piety, the state of spirituality, the state of truth. And Suraj Narayan Swami, as I explained, represents the intellect, the enlightened intellect in the human being. When I worship these 5 aspects, I develop these 5 powers, and I'm able to face up to life challenges successfully. Failure to do so, you may achieve some success, but failure is sure to follow. And then to get out of that state of failure may be very problematical, because you don't have the powers uncovered within you. Everybody needs these powers, devotees. So we chant these 5, the 5 names, 5 aspects of divinity, but remember why we are doing it. Wanting to tap into these powers. Let's concentrate. He Ramba Hare Jai, He Ramba Hare. 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 Jai Durga Hare, Jai Jai Durga 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 Hare. Jai Shiva Hare, Jai Jai Shiva Hare. Jai Shiva Hare, Jai Jai Shiva Hare. Jai Shiva Hare, Jai Jai Shiva Hare. Jai Shiva Hare, Shiva Shankar Hare. Jai Vishnu Hare, Jai Jai Vishnu 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 Hare. Aditya Hare, Jai Aditya 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 Hare.
कृष्ण हरे राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जपा कर यही नाम मन भवरे जपा कर यही नाम मन भवरे ओ जपा कर यही नाम मन भवरे जपा कर यही नाम मन भवरे जपा कर यही नाम मन बाबरे जपा कर यही नाम मन बाबरे ओ जपा कर यही नाम मन बाबरे जपा कर यही नाम मन बाबरे जय कृष्ण हरे 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 जय कृष्ण ओ जपा कर यही नाम मन बहरे ओ जपा कर यही नाम मन बहरे जपा कर यही नाम। बोल वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय। Devotees will now join Panitumesh as he will lead us off with a bhajan glorifying Bhagavan Sri Krishna. मृग नहीं को याद न बल रसिया मृग मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग अतलस को मको लहंगा सोहे अतलस को मको लहंगा सोहे झुमक सारे मोरे मन बसिया झुमक सारे मोरे मन बसिया मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग बरे बरे यखिया ने कजरा सोहे बरे बरे यखिया ने बरे बरे यखिया ने कजरा सोहे तेरे चितवन मेरे मन बसिया तेरे चितवन मेरे मन बसिया मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरके पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरके पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरके सब चोर ब्रज में बसिया सब चोर ब्रज में बसिया मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग नैनी को याद न बल रसिया मृग
मृग मुनि को यार न बने रसिया मृग नैनी। Goli Vrindavan, Sri Krishna Chandra ki jai. Now devotees, the sages have composed beautiful bhajans to help us in an eventuality as this one, where there is only one night and we want to do everything for Bhagavan Krishna, or almost everything, or as much as possible. So there's a simple bhajan which summarizes Krishna Katha, which is what I want to do. On the previous night we did Shiv Puran, I did that for Bhagavan Shankar. And the Devi Aarti itself summarizes Devi's Leelas. So you have these wonderful compositions that expatiate upon the glories of the Divine in a simple form. So I will present this bhajan, and afterwards we will take 2 incidents, time permitting, and dwell upon them. Devotee Brahmanand, he composed this bhajan. Those of you who understand Hindi will be in a better position to appreciate the bhajan. And those of you who can't learn Hindi or who don't know Hindi, how about trying to learn some? It will help you. There are many wonderful pearls of wisdom you can gather. But in the English, it doesn't sound the same way. Neither do they have the same effect. The Hindi is beautiful. Sanskrit is even more beautiful. But devotees, I'm not going to explain the whole bhajan. So, those of you who can't understand Hindi, either you listen to the voice, you listen to the music, or whatever you want. The choice is yours. But if you can understand the bhajan, then you are performing Hari Katha. Brahmanand says, O Krishna Ghara, O Krishna Ghara, Nand ke ahe sitara. हो तो ऐसा हो कृष्ण घर नंद के आए सीता। हो तो ऐसा हो करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा। हो तो ऐसा हो कृष्ण घर बकासुर को मसल डाला उठना जान से मारे। बकासुर बकासुर कंस को केश से खींचा कंस को केश से खींचा हो तो ऐसा हो कृष्ण घर कूद पानी के अंदर से नाग को नाच कर लाए। कूद पानी के अंदर से नाग को नाच कर लाए। चरण फन पे धर करके नचला। हो तो ऐसा हो कृष्ण घर नंद के आए सीता। तीर यमुना के जा कर के बजाई बांसुरी मोहन। तीर यमुना के जा कर के बजाई बांसुरी मोहन। तब चली घर छोड़ गज नहीं पिया। हो तो ऐसा हो चली घर छोड़ गज नहीं पिया। हो तो ऐसा हो कृष्ण घर रचाई रास कुंजन में मनोहर रूप बन करके। रचाई रास कुंजन में मनोहर रूप बन करके। तो देवतर शंख चढ़ाए। हो तो ऐसा हो
क्षण को चली आए तो ऐसा हो कृष्णधर। गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। तब सखी रोती रहा वन में। वो तो ऐसा हो सखी रोती रहा वन में। वो तो ऐसा हो कृष्णधर। पूरी पार्वती जाकर महल सोने के बनवाए। पूरी पार्वती जाकर महल सोने के बनवाए। हजारों रानियां यादी पसारा। तो ऐसा हो कृष्णधर नंद के आए सितारा। कुरु पांडव लड़े रन में जीत अर्जुन की करवाई। कुरु पांडव लड़े रन में जीत अर्जुन की करवाई। तो बचाई लाज द्रौपदी की सहारा। तो ऐसा हो बचाई लाज द्रौपदी की सहारा। तो ऐसा हो कृष्णधर। उतारा भार भूमि का सिधारे धाम अपने को। उतारा भार भूमि का सिधारे धाम अपने को। वो ब्रह्मा नंद दुनिया से लिया। हो तो ऐसा हो वो ब्रह्मा नंद दुनिया से लिया। हो तो ऐसा हो कृष्णधर नंद के आए सितारा। हो तो ऐसा हो करे सब प्रेम से दर्शन। हो तो ऐसा। Devotees, Krishna Bhagwan in summary. Krishna Bhagwan's Katha in summary. Now, we cannot, as I mentioned earlier on, deal with all the Leelas. So what I would like to do at this point, focus for a few moments on Bal Krishna, the child Krishna. His Leelas, Manohar, very magnetic. Bhagwan Sri Krishna Makhan Chor, he stole Makhan to charm the hearts of his devotees. He danced, he clapped, he sang, he created all sorts of mischief. And why not? The Lord has told us, once we have that love for him, he can do anything for us. Anything. Nothing is impossible with the Lord. Absolutely nothing. So devotees, I would like you to go on your own journey as you visualize some of the childhood activities of Bhagwan Sri Krishna. What he did, how he danced, stole Makhan. He is Gopal, protector of the cows. Whatever is in your mind. But you know what? Put something good in your mind. Bhagwan Krishna. Don't allow the minds to stray. Don't waste the opportunity. Samay na avar barambar. Don't have the opportunity again. So devotees, visualize Bal Mukund. जय बाल मुकुंदा कृष्ण गोविंदा यशोमती के लाल की ये मुरली मनोहर मधुर सलोन मधुसूदन की आरती।
जय बाल मुकुंदा कृष्ण गोविंदा यशोमती के लाल हरे मधुर सरोना मधुसूदन की यार जय बाल मुकुंदा ये जग में ज्योति अंतकरण की प्रकाश कराने वाला ये प्रकाश कराने वाला परमार्थ बताने वाला परमार्थ बताने वाला ये श्याम सुंदर की वर गिरधर की चहु मोर उजियार ये मुरली मनोहर मधुर सरोवर मधुसूदन की आरती जय बाल मुकुंदा ये अमृत वाले वेद बखाने संत रिझाने वाला ये संत रिझाने वाला भव पार कराने वाला भव पार कराने वाला ब्रह्म ज्ञान यही स्वर्ग धाम यही कुंजन मोहन छवि धाम ये मुरली मनोहर मधुर सरोवर मधुसूदन की आरती जय बाल मुकुंदा ये संपत्ति दाता अद्भुत दाता तीर मिटाने वाला तीर मिटाने वाला धन ध्यान बढ़ाने वाला धन ध्यान बढ़ाने वाला कभी कृष्ण हृदय में कभी कृष्ण हृदय में दीप जले अनहद घंटा ध्वनि बाजे ये मुरली मनोहर मधुर सरोवर मधुसूदन की आरती जय बाल मुकुंदा कृष्ण गोविंदा यशोमती के लाल ये मुरली मनोहर मधुर सरोवर मधुसूदन की आरती जय बाल मुकुंदा जय बाल मुकुंदा जय बाल मुकुंदा Devotees, we also have that image of Bhagavan Krishna, Bal Mukund in the mind's eye. Focus upon him, a charming Lord, most beautiful to behold. Dark in color, large, lotus-like eyes, red lips, chubby cheeks, hair tied right up on his head as we say coconut tree style. Bhagavan Sri Krishna, there's a belt around his waist with bells. Whenever he would walk, the bells would jingle. The mother would know where he is. From very small, he had a small basuri. Bhagavan Sri Krishna, keeping about, crawling about, tottering about, running about, jumping about. Bhagavan Sri Krishna, the Lord of all creation. He who see without eyes, walk without the feet, function without the body, manifests himself over six. Devotees, whole at him is room. Hey Gopala Gopala Radhe Nandalala Gopala Gopala Radhe Nandalala Hey Gopala Gopala Radhe Nandalala Gopala Gopala Radhe Nandalala Murali Manohar Radhe Nandalala Murali Manohar Radhe Nandalala
हे मुरली मनोहर राधे नंद लाला, मुरली मनोहर राधे नंद लाला, गोपाल गोपाल राधे नंद लाला, गोपाल गोपाल राधे नंद लाला, हे गोपाल गोपाल राधे नंद लाला, गोपाल गोपाल राधे नंद लाला, मधुबन संसार राधे नंद लाला, मधुबन संचार राधे नंद लाला, हे मधुबन संसार राधे नंद लाला, मधुबन संचार राधे नंद लाला, राधे नंद लाला, राधे नंद लाला, हे राधे नंद लाला, राधे नंद लाला, जय जय राधे नंद लाला, राधे नंद लाला, हरे राधे नंद लाला, राधे नंद लाला, हे मधुबन संसार राधे नंद लाला, मधुबन संचार राधे नंद लाला, मुरली मनोहर राधे नंद लाला, मुरली मनोहर राधे नंद लाला, हे मुरली मनोहर राधे नंद लाला, मुरली मनोहर राधे नंद लाला, हे गोपाल गोपाल राधे नंद लाला, गोपाल गोपाल राधे नंद लाला, हे राधे नंद लाला, ओ राधे नंद लाला, हे राधे नंद लाला, राधे नंद लाला, प्यारी नंदलाल दर्शन दे दो हे नाथ, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, ओ लॉर्ड माय आईज आर क्रेविंग फॉर योर दर्शन, ब्लेस मी विद योर दर्शन ओ लॉर्ड, हे प्यारे नंदलाल, हे यशोदा की बाल, दर्शन दे दो ना, दर्शन दे दो, प्यारे नंदलाल दर्शन दे दो, प्यारे नंदलाल दर्शन दे दो, हे यशोदा की बाल दर्शन दे दो, यशोदा की बाल, यशोदा की बाल, यशोदा के बाल दर्शन दे दो, प्यारे नंदलाल दर्शन दे दो, प्यारे नंदलाल दर्शन दे दो, नटवर लाल 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 दर्शन दे दो, हाँ दर्शन दे दो, हो दर्शन दे दो, हो दर्शन दे दो, हो दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, हो दर्शन दे दो, नटवर लाल, नटवर लाल, नटवर लाल दर्शन दे दो, नटवर लाल दर्शन दे दो, गिरिधर बाल 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 दर्शन दे दो, हरे नंदलाल दर्शन दे दो, हरे नंदलाल दर्शन दे हे यशोदा की बाल दर्शन दे दो, यशोदा के बाल दर्शन दे दो, यशोदा की बाल, यशोदा की लाल, यशोदा की बाल दर्शन दे दो, यशोदा के बाल दर्शन दे दो, हरे नंदलाल दर्शन दे दो, हरे नंदलाल दर्शन दे दो, 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 हरे हरे कृष्ण हरे मुरारी, 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 जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, राधा मोहन राधा जीवन, राधा मोहन राधा जीवन, राधा मोहन राधा जीवन, राधा मोहन राधा जीवन, मंगल कुंज बिहारी, मंगल कुंज बिहारी, मंगल कुंज बिहारी,
मंगल कुंज विहारी। जय हरे कृष्ण गोवर्धन गिरिधारी। 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 राधा मोहन राधा जीवन। राधा मोहन राधा जीवन। राधा मोहन राधा जीवन। राधा मोहन राधा जीवन। मंगल कुंज विहारी। 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 Devotees, Bhagavan Sri Krishna, he appeared as a son of Vasudeva and Devaki, but transferred across to Gokula Puri to become the son of Nand Baba and Yashoda Maya, his foster parents. And I explained what karma on the part of Nand Baba, who was in a previous birth the son of a gopi, how he performed devotions to Bhagavan Shankar, and he was blessed by Hanumanji that Lord will come as his son. Devotees, that Giridhari Govinda, Gopala, charmed the hearts of so many. I'll go into a small episode, but before so doing, let's visualize Bhagavan. Not so much of a baby now, maybe 4 or 5 years of age. Giridhari Murari Govinda. Giridhari Murari Govinda. Giridhari Murari Govinda. Giridhari Murari Govinda. Radhe Krishna Murari Govinda. Radhe Krishna Murari Govinda. Radhe Krishna Murari Govinda. Radhe Krishna Murari Govinda. Ghana Shyama Murari Govinda. Ghana Shyama Murari Govinda. Ghana Shyama Murari Govinda. Ghana Shyama Murari Govinda. Giridhari Murari Govinda. Giridhari Murari Govinda. Manamohan Murari Gopala. Manamohan Murari Gopala. Manamohan Murari Gopala. Manamohan Murari Gopala. Radhe Shyama Murari Gopala. Radhe Shyama Murari Gopala. Radhe Shyama Murari Gopala. Radhe Shyama Murari Gopala. Giridhari Murari Govinda. Giridhari Murari Govinda. Ananda Sindhu Prabhu Nandalala. Anand Sindhu Prabhu Nandalala. Ananda Sindhu Prabhu Nandalala. Anand Sindhu Prabhu Nandalala. He Umapati Dev Prabhu Nandalala. He Umapati Dev Prabhu Nandalala. He Umapati
पति देव प्रभु नंदलाला हे उमापति देव प्रभु नंदलाला गिरिधरि मुरारी गोविंद गिरिधारी मुरारी गोविंद गिरिधरि मुरारी गोविंद गिरिधरि मुरारी गोविंद. Devotees, one episode that really stands out in my mind, one that I love very much. Bhagwan Sri Krishna devotees tending to the cows, going with his friends to graze the cows, as we say. The river Yamuna was not very far away, but within the Yamuna there was a pond that was called Kalindi. Now in this pond there lived a very deadly king cobra. Many hood, many heads. A hooded cobra, many heads. Very, very poisonous. One bite from that king cobra and it is his Kanpuram. That's it, you finish. Devotees, it is said that pond was a cause, as people put it, for many to die. Many animals, by mistake, go in there, just drinking that water, that's it. Birds flying over that pond will fall into that pond because of the poisonous fumes of the serpent. They will die terrible deaths. All around, the greenery became brown, burnt because of the poisonous fumes. So everybody was saying that, you see, that Yamuna, that Kalindi, is a dangerous pond, don't go to the Kalindi. They were blaming the Kalindi killing people. Was it the Kalindi, devotees? Or was it the snake? But you know society, how society is. Society don't get to the root of the problem. Whatever hit the